summary or overall picture of a chemical plant. You have a preparation stage, you have reaction stage and purification stage. Raw materials are not always pure, so they may need to be purified, and so we have undesired reactants. And if this is a mixture of two reactants, then you purify it and get a pure reactant here, and undesired reactants may be eliminated. Then the reaction happens or takes place, and you may get more than one product from the reaction. One may be desired product, others may be undesired products. So you need to purify it to get the desired product, and then undesired product may be used somewhere else. Unreacted reactants, because conversion will not always be 100%. So unreacted reactants are recycled back to the reaction. Okay. So stage 1 is purification, and stage 3 is purification, right? So stage 1 and 3 require separation operations. For example, distillation, absorption, extraction. This we have seen in PC, and you will study in mass transfer also. Okay. And what 40 to 80% of investment is for separation operation equipment. Most of this money goes into this and this. And what we will study in our what you call CET2 will be applicable for distillation, absorption, extraction, all the separation operations, and also for reaction. So basis of all these operations will be for CET2. So property of solutions we started yesterday, and we have seen what is partial molar property, right? Any doubts, yes, any questions on that? Okay, so let us see this picture, slide number 4. Can you see slide number 4? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this plots partial molar volume of water and partial molar volume of ethanol against mole fraction of ethanol in the mixture. Okay, so the molar volume of water is 18, right? This is in centimeter cube per mole. So 18 centimeter cube per mole is the molar volume of pure water, and the molar volume of pure ethanol is 58 centimeters cube per mole. But if you take a mixture in between with different compositions of ethanol in water, the partial molar volume is different at each composition. That's what we said yesterday. It depends on the environment in which we are at. If it takes say 50% or 40% say ethanol in water, then partial molar volume of water is around say 0.17, and that of ethanol is around say 56.5. So it will keep changing depending on the solution concentration, because the environment is different. At 20% ethanol, 40% ethanol, 60%, 80%, everywhere the environment is different. So if we add water to 40% ethanol, the contribution of 1 mole of water will be only 17 point some centimeter cube per mole. Similarly, if you add 1 mole of ethanol to 40% ethanol in water, the contribution of 1 mole of ethanol will be around 56.7 centimeters cube per mole. Is this clear? Do you understand this diagram now? This is what we discussed yesterday, but this is showing actually a diagram. Okay. So if there are no doubts, then we'll go to the example. Sir, yeah. So will you please repeat this one more time? Okay, so we said partial molar volume is? No, that diagram. Defining what is partial molar volume. Add 1 mole of water through a solution of pure water. Suppose add 1 mole of water to pure water. Then contribution of 1 mole of water in pure water is 18 milliliters or 18 centimeters, right? So the environment is same as that what we are adding. Now if I add water to ethanol in water,
right? Suppose I add water to ethanol, 40% ethanol in water, then the contribution of 1 mole of water to the volume of the solution is around 17.3 or 4, 17.2 or 3 centimeters cube per mole instead of 18, because the environment is different now. The environment has 40% ethanol and 60% water. So the bonding is different in this environment than in pure water. Right? Similarly, if I add pure ethanol, or rather ethanol to pure ethanol, this is when I say 100% ethanol is pure ethanol, right, at this end. If I add 1 mole of water, 1 mole of ethanol to pure ethanol, then the contribution of 1 mole of ethanol is 58 centimeters cube per mole in pure ethanol. But if I add the same ethanol 1 mole to say 40% ethanol in water, then the contribution of 1 mole of ethanol is around 57 or so centimeters cube per mole. And this will keep changing depending on the composition of the solution to which we are adding water or ethanol. This partial molar volume is changing because the environment is different for each concentration. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So let's take an example. We have seen this yesterday. Slide number 5. Can you see the slide number 5? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you take, yes, we said that molar volume of pure water is 18 ml per mole. That of pure ethanol is 58 ml per mole. Now, if you take partial molar volumes at 100% ethanol, right? So that of water is 14, because now we are adding water to 100% ethanol. The environment is totally different. Whereas if I add ethanol to 100% ethanol, it is still 58, right? So volume before mixing, if I take 1 mole of water, 18 ml, 1 mole of ethanol, 58 ml, 76 ml, right? I'm starting to make the solution with 1 mole of water and 1 mole of ethanol. So total volume will be 76 separately. Separately I measure 18 ml of water, separately I measure 58 ml of ethanol. Now if I mix it, what will happen is the contribution of water is now only 14 and that of ethanol is 58, because I am adding water to ethanol. Right, so it is 72. This is a very simple example. It's not exactly like this, but it shows that okay, if I mix two solutions, two liquids, the contribution goes down. This idea is basically a very simple example. It's not really that's how it happens, because we add 1 mole of water to very large volume of solution, so that the concentration does not change. But here we are taking 1 mole, 1 mole. Okay. Any doubts, questions? This is a very simple example to demonstrate the difference in volume. Okay, so if I take similarly this one, if I take 50% ethanol, partial molar volume of water is 16.9 and that of ethanol is 57.4. So in this case, after mixing, it will be this 74.9. This is simplified example. But actual example के लिए we have to use this chart and find out what is the partial molar volume and then calculate it. Any questions or doubts on this one before we proceed? Okay, so if you look at this one, as I said yesterday, this is pure ethanol, 50 ml, 58 ml per mole, pure water, 18 ml per mole. If this is a solvent, this is a solute. If the solution is say 20 mole percent, that means 20 mole percent of ethanol water, then the picture is something like this, right? So mostly it is water, this big circles is water and these rectangles are ethanol. Whereas if you take 10% ethanol in water,
then it is mostly water and very little of ethanol. And if I take infinite dilution, that means if I take pure water and add maybe few ml of ethanol, it is infinite dilution. That means mostly it is water and it's only few molecules of ethanol. So that is why the contribution of ethanol in the solution to volume is different. Here environment is different, here environment is different, here environment is different. Everywhere environment is different. So bonding is different. The bonding between water and water is different here from between in this one. Similarly, bonding between ethanol and water is different here from here. So that is the physical explanation for this. Any doubts? This is what we have seen yesterday. We don't need to repeat it. This is also what we have seen yesterday, definition. And this example shows that if I take benzene, toluene, they are all similar molecules. They behave as the ideal solution. So in this case, the volume will be almost additive. If I take 88, 89 ml or 1 mole of benzene and 1 mole of toluene, the total volume will be addition of the individual volumes. Whereas ethanol water is not the case. Any doubts, questions? Okay, so if there are no doubts, no questions, let me proceed from what we did yesterday. Okay, so we had completed the derivation. Now we'll look at different forms of the equation which you can use for partial molar properties of solution. Okay, so M superscript T is any property, its total property, and M is molar property of solution. So total, suppose it could be volume, it could be enthalpy, it could be anything. So total molar property is equal to number of moles into molar property of solution. And this is a function of temperature, pressure, number of moles of each component. So if we take the total derivative of Mt, then what we get is dmt is equal to Mt by P with respect to P at constant temperature and number of moles into dP plus Mt by T at constant pressure and number of moles into dt plus Mt by N1, that means only change of N1, so constant temperature, pressure, N2, N3, etc. into dN1. And if I take I component, Mt by Ni at constant temperature, pressure, N suffix J, and that J is not equal to I into dNi. Is this okay? Yes, Can you sir. see this? Are you able to see this PDF? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So is this okay? A simple Yes, derivative sir. you are taking. Where N is capital N is total number of moles and Nj is Nj, where J is not equal to I indicates number of moles of all components except I are kept constant. So at constant temperature and pressure, dt equal to 0 and dp equal to 0, and what we'll get is dm superscript t is equal to summation of I equal to 1 to n Mt by Ni at constant temperature, pressure, n suffix j, where j is not equal to I into dni. Or we can write this as dmt is equal to summation of mi bar. This is nothing but partial molar property, dmt by dni. Partial molar property into dni, summation I equal to 1 to n. Now, Mt is a extensive property, but this one is a partial molar property. It is an intensive property because we are talking about per mole, right? dmt by dni.
So from this you can write this as dmt is equal to m1 bar dn1 plus m2 bar dn2 plus whatever components are there. Or we can also write as m1 bar x1 plus m2 bar x2 plus other components into dn, because n1 is equal to x1 into n. So dn1 is equal to x1 into dn. So if you integrate equation 3, what we will get is mt is equal to m1 bar x1 plus m2 bar x2 plus etc. into n. Or we can write this mt is equal to m1 bar n1 plus m2 bar n2 for all components. You can stop me anytime you have a difficulty or you don't understand. That means mt is equal to summation of mi bar ni. Any questions, doubts on this? No? Okay. So we have this equation. dmt is equal to summation of mi bar dni. For 1 mole, if you take 1 mole of solution, nm is equal to summation of mi bar xi and dm is equal to summation of mi bar dxi. So you can write for total moles or you can write for 1 mole. So if you write this, what we get is V is equal to V1 bar x1 plus V2 bar x2 plus all components. This is what we used yesterday, right? Any doubts, questions on this, on these equations? Sir, Yeah. सर वो समेशन ऑफ आई रन्स फ्रॉम 1 to n मीन उसमें सर वो n किसका रिप्रेजेंट करता है? वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है क्या? वो मतलब वो हमने क्या क्या ऐड किया है उसको रिप्रेजेंट करता है? When you say summation of I equal to n, it is n is components, right? ये actually ये n और n ये moles है, ये number of components है. So it is, yeah, ये double actually कुछ और variable use करना चाहिए था. This number of components. If there are n components, then summation 1 to number of components. Number of components. Yeah, and this number of moles of I component. Yeah, and दोनों जगह use हुआ है. Work it out. Okay. So in that case, let us take an example. This is short example in Narayanan, but that appears in exam many times, so I thought I'll take it here. So we have to make a 30% mole percent methanol water solution. And what is given is molar volume of pure methanol is 40.727 into 10 to the power minus 6 meter cube per mole, and molar volume of pure water is 18.068. We normally take 18 as round off, but he has given exact number value into 10 to the power minus 6 meter cube per mole. Right. So what we need to find out the volume of methanol and water which we need to mix to prepare 2 cubic meters of 30% methanol water solution. And what is also given is partial molar volume of methanol in 30% methanol water solution is 38.632 into 10 to the power minus 6 meter cube per mole, and partial molar volume of water in 30% methanol water solution is 17.765 meter cube per mole. So if you see, compare molar volume and partial molar volume, they are different for methanol as well as water. So now can you attempt this? Would you like to solve it online? Yes, no? Because सर्वों में प्रॉब्लम्स तो आएगा ही, न्यूमेरिकल्स आएगा. You don't practice, you will not get the understanding.
can give you the solution. I can tell you how it is done, but that is not going to help you. What is the alternative? What do you suggest? Will you be able to solve it while we are in the class online? Or would you like Sir, we will try. Okay, so let's try. The formulas we have given, right? All the formulas are given. All the formulas are given. I have given you V is equal to V summation of Vi bar Ni, right? Total volume is nothing but summation of Vi bar partial molar volume into number of moles. So can you solve this? Or next time should I give an assignment and you solve at home and then we discuss what is the way you want to do? Let's see who can solve this. It's not a difficult problem. I need a response. No silence. सर वो VM बार VW बार जो है ना वो गिवन है क्या? हाँ गिवन है ना, ये डेटा गिवन है पूरा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मोलार वॉल्यूम भी दिया है मिथनॉल का, और मोलार वॉल्यूम दिस प्योर मिथनॉल का मोलार वॉल्यूम इतना है 40.727 मीटर क्यूब पर मोल। प्योर वाटर का मोलर वॉल्यूम is 18.068 10⁻⁶, but partial molar volume of methanol in 30% methanol is 38.632, and partial molar volume of water in 30% methanol is 17.765. And what we need to prepare is 2 cubic meters of 30 mole percent methanol water solution. So any ideas how this will be solved? No idea. कैसे करेंगे? Sir, Because problems बहुत है. How do we solve thermal problems? sir, first we need to calculate the total volume, no? Yes. And then so for 2 meter cube, how much moles can be required from the total volume? That we have to Yes. calculate, no? Right. And then once you get the moles of each methanol and water, then find out what is the volume of each. Correct? Volume of each. Yeah. Who is this? Who was this? Let me know your name. Niranjan here. Niranjan, good. You are on the right track. So first you find out what is the moles or rather volume of the mixture. You know V1 bar, you know V2 bar, right? So you can find out what is the molar volume of the mixture, 30% methanol in water. ठीक है? This is the equation. V equal to V1 bar x1 plus V2 bar x2. बराबर? So you know V1 bar, you know V2 bar, you know x1, you know x2. You can find out the molar volume of 30% methanol in water. When you do this, then we'll take the next step. 14.025 10⁻⁶ कितना? मीटर क्यूब पर मोल। कितना आया? 24.025 into 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। Yes. करेक्ट। हाँ वही आ रहा है। ठीक है, कितना लोग का हो गया? हैंड रेज कर सकते हैं क्या? रितेश रितेश का हो गया, और किसका हो गया? सर और किसका हो गया? मेरा हो चुका है। कौन? रंजन, ओके। और किसका हो गया?
और किसका हो गया? दीक्षिता? नहीं सर। Total volume is 3.39 into 10 question raised to minus 5. 3.39 -5 किसका वॉल्यूम है ये? Murtuza. नहीं, किसका वॉल्यूम है? तेरा वॉल्यूम Total molar volume. उतना नहीं होगा। sir, can you show the question? Okay, I have one question. You have to make a 30% methanol in water solution, mole percent. Molar volume of pure methanol is 40.727. Molar volume of pure water is 18.068. Now we have to find out volume of methanol, pure methanol, and pure water, which we should mix together to prepare 2 cubic meters of 30% methanol water solution. When we have problem, and they are given that partial molar volume of methanol is 38.632 and that of water is 17.765. Right? सर वो वाटर को भी 10⁻⁻⁶ है क्या? हाँ, सब जगह -6 है ना? नहीं है क्या इसमें? मैंने नहीं लिखा क्या? और ये -6 तो मोलर वॉल्यूम 17 पार्शियल मोलर। हाँ ये भी पार्शियल वॉल्यूम ऑफ वाटर सब 10⁻⁶ आएगा। हाँ, गलत हो गया मेरा यहाँ पर 10⁻⁶ आएगा यहाँ पर भी। आएगा ना? 17 into सब जगह 10⁻⁶ रहेगा ये, बिकॉज ए सेंटीमीटर क्यूब पर मोल इज ये 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर कन्वर्ट करने के लिए। तो वी कैलकुलेट किया गया। हाउ मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड वी कैलकुलेशन? भूमिका काकड़े? यस सर, हो गया कैलकुलेशन भूमिका? कर रही हूँ सर। कर जल्दी। देवेंद्र मोरे? हाँ सर कर रहा हूँ। करो। दीक्षिता हो गया? नहीं सर। डिफिकल्टी है तो बताओ मेरे को। सी इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी, टेक्निकल डिफिकल्टी आल्सो यू कैन टेल मी कि हम नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, बिकॉज वी आर ट्राइंग आउट दिस ऑनलाइन। थ्योरी के लिए इजी रहता है, प्रॉब्लम्स के लिए कैसे करेगा? क्वेश्चन इज दैट। सर नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? वो 2 मीटर क्यूब से आफ्टर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब को लेके क्या करना है? क्या कैलकुलेट किया गया तुमने? टोटल मोलार वॉल्यूम। सर वो आंसर क्या है? मोलर वॉल्यूम कितना आया? 2.48 into 10⁻⁵ ओके, 2.48। हाँ 2.40 आना चाहिए। I'll check sir, 1 second. 2.40 सर आंसर वो 48.05 into 10⁻⁻⁶ है क्या? इसका टोटल मतलब 2 मीटर क्यूब के लिए। नहीं, मैंने सी गो स्टेप बाय स्टेप। हु इज दिस? गो स्टेप बाय सर स्टेप। देवेंद्र? हाँ See, I told you what you need to do is find out simple. Find out this molar volume. This molar volume, ये दिख रहा है इक्वेशन V is equal to V1 bar x1 plus V2 bar x2. हाँ Can you see this? Right? So V1 bar दिया है हमारे को, पार्शियल मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है मिथनॉल का। हाँ x1 पता है मिथनॉल का हमारे को। V2 bar that is partial molar volume of water पता है हमारे को, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पता है हमारे को, राइट? सर V किसका वॉल्यूम आएगा? This molar volume of 30% solution. This is molar V is molar volume of 30%. Per mole of methanol or water? Per mole of solution, not methanol, not water.
what solution now. समझा ना? This is partial molar volume of methanol into mole fraction of methanol plus partial molar volume of ethanol into mole fraction of water and into mole fraction of water, and this will give us V, which is molar volume of 30% methanol in water solution. It is not for methanol, it's not for water, it is for the solution which you are preparing. Understand? Yes, right? When you use this equation or this equation, you get mixture property from partial molar property. dm is equal to summation of mi dxi will give us dm is mixture property from partial molar property. M is equal to summation of mi bar xi mixture property from partial molar property. समझा क्या? So can you now do the calculation? Let me know what is the value of V, capital V. Sir, 24.025 into 10 raised to minus 6. Correct. Correct. So everybody should get this answer. आया सर. आया ना? हाँ. और किसका आया? दीक्षिता आया क्या आंसर? Yes, sir. भूमिका आया क्या? हाँ सर। ओके, और कौन है? खुशी, और कौन है? शिवानी, यस आया क्या आंसर? हाँ सर आया। ओके, नितिन, नितिन आया क्या? सो रहा है क्या नितिन? Respond please. When I ask you to take your name, you have to respond. Nitin. Shraddha. Siddhi. यस सर। है आंसर? यस सर। Okay. So now we know. Viraj आया क्या आंसर? हाँ सर आ गया। So now we have found out V, capital V, which is nothing but molar volume. That means one mole of 30% methanol in water solution, right, will have a volume of how much? 24.025 into 10 raised to minus 6 cubic meters. ठीक है? It is solution volume. Now what we need to do is we need to prepare a solution whose volume is how much? कितना बनाने का solution? 2 मीटर। 2 meter cube. Right? So if you have to prepare 2 meter cube solution, how many moles will be there in it? Can you find out from this molar volume? Total moles मिलेगा उसमें हमारे को. We know molar volume. We know how much volume we want to prepare. So we can find out how many total moles of methanol plus water we will need. Can you find out? Sir, 83,246. Yeah, 83.24 into 10 to the power of 3. Moles. Right? Who was this? Sir, Devendra. Devendra, okay. So what you have done is you have taken volume 2 meter cube and divided by molar volume, right? वही किया ना अभी? Yes sir. Wait. So what you have done is you have done सबका हो गया क्या? Have you found out number of moles, total number of moles? Yes sir. और किसका हो गया? I want to see your response before I show you the calculation. और किसका हो गया? सर कुछ समझा नहीं सर, कैन यू रिपीट सर? ओके, रिपीट करने का
ठीक है, इसको नहीं समझा? विराट सर। विराज, ओके ठीक है, विल रिपीट, बट फर्स्ट आई वांट टू नो कितने लोगों का हो गया। दीक्षिता हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। सिद्धि हुआ क्या? नो सर। नो सर। ओके ओके, सो ओनली देवेंद्र एंड Murtaza, is it? सर सर जो वो मोलर वॉल्यूम हमने निकाला था 24 into 10 to the power -6, so that was for 1 mole of 30% methanol water solution, right? Correct. So we are going to find out for 2 meter cube of whole solution from the molar volume, right sir? कितना होगा? Yes sir. सिंपल पीसी का प्रॉब्लम है ये। यूनिट्स दिया आपको, यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? यूनिट्स बैलेंस करो, और कुछ नहीं करने का इसमें, और कुछ नहीं, फॉर्मूला नीचे तो ऑलवेज टेल यू, पीसी में बताया था आपको, यू डू द यूनिट्स बैलेंस, यू विल गेट द आंसर करेक्टली। मोल्स लाने के लिए क्या चाहिए? मोल्स न्यूमरेटर में चाहिए, राइट? तो वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम को कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्या करोगे? वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। Yes. I don't need to tell you this formula. ये आपको, see, you need to understand this thing. मेरे को टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? You should be able to figure out these things. समझ में आया लोगों को? सर तो हाँ सर, वो अभी हमने वो जो मॉलिक्यूल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, वो दोनों का मिलकर है ना, मुझे मेथनॉल और वाटर का। ठीक है, let us go step by step. Don't jump. So we have done this. V is equal to V1 bar x1 plus V2 bar x2. V1 bar into 0.3 plus V2 bar into 0.3, 0.7. And this is what we got as V molar volume, meter cube per mole. Right? सबका आ गया। Now what we need to do is we need to find out ये 2 मीटर क्यूब जो सोल्यूशन बनाना है हमारे को, 30% मिथनॉल इन वाटर, उसमें टोटल मोल्स कितना है? ठीक, क्या करेंगे? वॉल्यूम लेंगे, उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल गेट इज मोल्स। आई डोंट नीड टू टेल यू दिस फार्मूला, ये सिंपल फिगर आउट कर सकते हैं आप कि मोल्स कैसे निकालने का। मेरे को समझा ना? फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल मोल्स, 83.24 इन 10 to the power 3 मोल्स होना चाहिए टोटल। दिस इज मोल्स ऑफ मिथनॉल प्लस वाटर, दोनों का मिलाकर मोल चाहिए। 2 मीटर क्यूब के लिए इतना मोल्स चाहिए हमारे को, राइट? समझ में आया लोगों को? समझ में आया क्या लोगों को? Yes, sir. हो गया ये, राइट? नाउ इफ यू हैव these many moles of methanol plus water in a 30% methanol water solution, तो उसमें मिथनॉल कितना मोल्स होगा? 0.3. 0.3%। 0.3 into 83, right? 83 point something, जो भी आंसर है। To find out how many moles of methanol will be there in the solution. Similarly, find out how many moles of water will be there in the solution. आ गया? Total moles मिल गया हमारे को। Now we know solution is 30% methanol in water. So 30% of the moles will be methanol, 70% will be water. Find out how many moles of methanol will be required to make that 2 cubic meters solution, and how many moles of water will be required to make that 2 cubic meters solution. सर आंसर क्या आ रहा है उसका? 24.97। हाँ, 24.972 into 10⁻³ Okay. जितना मोल्स होता ऑफ वाटर का, और वाटर का
58.268. यस, सो और मिथनॉल का मोल्स मिल गया, वाटर का मोल्स मिल गया, राइट? हाँ सबका हो गया क्या? आई वांट टू नो। देवेंद्र हो गया क्या? यस सर, हो गया। यस सर। भूमिका हो गया? यस सर। ओके, और कौन है यहाँ पर? दीक्षित हुआ क्या? दीक्षिता हो गई क्या? नहीं सर, कर रही हुई। कर रही है। नुपुर हुआ क्या? नुपुर सैम हियर। कैलकुलेट किया क्या? हाउ मेनी मोल्स Yes, ऑफ sir. methanol will be required? How many moles of water will be required? Are you calculating? So yeah, I'm calculating. Silent. Need to participate. सर वॉल्यूम क्या था वो ऊपर दिखाओ ना सर गिवन में। हाँ, बताता हूँ। 2 cubic meters solution बनाने का है। कहाँ गया? प्रॉब्लम है ना? We need to find out volume of methanol and volume of water separately, which we need to mix to prepare 2 cubic meters of 30% methanol water solution. हो गया? मिथनॉल का मोल्स आ गया, वाटर का मोल्स आ गया। शिवानी, आर कैलकुलेटिंग? हाँ सर, हो सिद्धि हुआ गया? गया। हो गया? हाँ, हो गया सर। सो वी हैव टोटल मोल्स इतना आया था। ओके, सो मोल्स ऑफ मिथनॉल 30% से 0.3 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, 24.97 मोल्स आया। मोल्स ऑफ वाटर 58.27 मोल्स आया। नाउ वी नो द मोलार वॉल्यूम ऑफ प्योर मिथनॉल and we also know the molar volume of pure water. So we can find out volume of methanol required. ये moles पता है 24.97 10 to the power of 3. Molar volume से again multiply करना है in this case because we want to find out volume, right? So multiply moles with molar volume of pure methanol. Pure methanol है, partial molar नहीं आएगा यहाँ पर. To get how much methanol will be required for 2 liters or 2 cubic meters of solution. समझा गया? ये मोल्स निकाला हमने, मोल्स ऑफ मिथनॉल रिक्वायर्ड, नाउ मल्टीप्लाई बाय प्योर मिथनॉल का मोलार वॉल्यूम। पार्शियल मोलार वॉल्यूम इज फॉर फाइंडिंग मिक्सचर वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम इज फाइंडिंग प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। समझा गया? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Similarly, if you take water, so many moles of water are required, multiply by molar volume of pure water and we get volume of water required for making 2 cubic meters of solution. समझा क्या लोगों को? Did you guys understand? Any doubts, questions on this? सर हेलो Yeah. सर, यहाँ पे वीएम बार नहीं लेना है ना? नहीं, यहाँ we are talking about pure methanol volume, pure water volume. So we have to use molar volume of pure water and molar volume of pure methanol. अगर सर हमें वो पार्शियल मोलर निकालना था तो फिर हम वीएम बार लेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, पार्शियल मोलार नहीं निकालने का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? We have to make a 30% methanol water solution, right? तो प्योर मिथनॉल हमारे को मिलता है लैब में, प्योर वाटर है अपने पास, टैप वाटर ले लो। सो कितना वॉल्यूम लेना चाहिए मिथनॉल का, कितना वॉल्यूम लेना चाहिए वाटर का, टू मिक्स इट सो दैट वी गेट 2 cubic meters of mixture
which is 30% methanol in water. That is the problem statement, right? तो हमने क्या किया पहले, फर्स्ट वी फाइंड आउट कि मिक्सचर मोलर वॉल्यूम क्या है. This is mixture molar volume, right? Solution molar volume. And for that we need to use partial molar volume into mole fraction. ये हमने derive किया था. So that tells me कि mixture molar volume क्या है. So 1 mole of 30% solution will have 24.025 10 to the power minus 6 cubic meters volume. This is mixture volume per mole. अभी हमारे को 2 cubic meters बनाने का इसका solution का, तो कितना मोल्स होगा टोटल मोल्स इसमें, तो वी डिवाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट, एंड दैट विल गिव अस कि टोटल मोल्स कितना है. दिस मोल्स इज मिथनॉल प्लस वाटर, दोनों मिलाकर कितना मोल्स हमारे को है चाहिए सॉल्यूशन में फॉर मेकिंग 2 cubic meters ऑफ सॉल्यूशन. नाउ इसमें 30% मिथनॉल है, 70% वाटर, सो वी कैन फाइंड आउट कि मिथनॉल का कितना मोल्स है सॉल्यूशन में और वाटर का कितना मोल्स है सॉल्यूशन में, राइट. सो वंस यू गेट दिस इज प्योर मिथनॉल, दिस इज प्योर वाटर. प्योर मिथनॉल का मोल्स मिल गया, प्योर वाटर का मोल्स मिल गया. नाउ वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर कि वॉल्यूम ऑफ मिथनॉल कितना लेना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम will give me volume of methanol which I need to take starting में, and similarly moles of water into molar volume of water will give me कितना volume of water लेना पड़ेगा. So if you see methanol is more than 1 cubic meter, water is also more than 1 cubic meter, but when I mix these two I'll get exactly 2 cubic meters of 30% methanol in water. That means volume कम हो गया, right? एडिटिव नहीं है ये, 2.06 नहीं आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 2 cubic meters, बिकॉज इफ यू सी इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर मिथनॉल इज 40, पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज 38, कम हो जाता है, राइट, मिक्सचर में. सिमिलरली वाटर का मोलर वॉल्यूम इज 18, मिक्सचर में 17%, यानी मिक्सचर में कम हो जाता है उसका वॉल्यूम. दैट इज व्हाई वी नीड मोर वॉल्यूम ऑफ प्योर मिथनॉल and water to make pure methanol and water to make solution. Sir. Yeah. Sir, can you repeat that last statement? I missed that. See, this is pure component molar volume, right? Vm 40.7 for methanol, right? This is pure component volume for water 18.08 molar volume, right? एक मोल ऑफ मिथनॉल लिया मैंने, तो इसका 40 ml वॉल्यूम होगा, राइट, ml में लिया तो. यस सर. हाँ. सिमिलरली वाटर का लिया मैंने 1 मोल, तो 18 ml वॉल्यूम होगा वाटर का, राइट, ठीक है. बट अगर ये दोनों मिक्स किया तो मिक्सचर में उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मिथनॉल का हो जाएगा 38 और वाटर का हो जाएगा 17, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन कि इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डिंग चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है. दैट इज व्हाई वी नीड मोर देन 2 liters और cubic meters of methanol plus water to make 2 cubic meters of solution. समझा क्या? यस सर. हाँ सर. इसको डाउट है, क्वेश्चन है? No, sir. Okay. So I'm downloading attendance. सर वो जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है उसमें 30% मिथेनॉल एंड रेस्ट 70% वाटर, मींस वैसे. What is the question? वो जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 molar solution नहीं है. Solution ये is 30%. जो हमने V फाइंड किया ना, टोटल वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, हाँ, तो वो जो 1 मोल है उसमें 30% मिथेनॉल एंड 70% वाटर वैसे है क्या?
प्लीज म्यूट, आवाज से बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है किसी के घर से, म्यूट करो प्लीज। हेलो हेलो, यस सर। बोलो ना, क्या क्वेश्चन था? सर वही क्वेश्चन था, क्या? वो मोलर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, वो जो है वो थोड़ा नहीं समझा। 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं है ये। मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 mole of solution occupies so much volume. मोलर सॉल्यूशन नहीं है, इस 30% मिथनॉल है, 70% वाटर है। इफ यू हैव molar volume means volume of 1 mole of solution. Because units are meter cube per mole. So if I take 1 mole of 30% methanol in water solution, that means 0.3 moles methanol, 0.7 moles water का solution मैंने लिया, तो मेरा वॉल्यूम होगा 24.025 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर्स। समझा गया? यस सर। दिस इज द मोलार वॉल्यूम। सॉल्यूशन का भी मोलार वॉल्यूम होता है, प्योर कंपोनेंट का भी मोलार वॉल्यूम है। ये सॉल्यूशन का मोलार वॉल्यूम है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सर समझ गया। समझ गया ये? तो थोड़ा थिंकिंग क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग मिक्सचर मोलार वॉल्यूम। मिक्सचर मोलार वॉल्यूम का बिकॉज वी वांट टू मेक 2 cubic meters ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, राइट? तो जब हम ये वॉल्यूम ले रहे हैं 2 cubic meter, उसको डिवाइड करना पड़ेगा मिक्सचर मोलर वॉल्यूम से, नॉट प्योर कंपोनेंट। इसलिए हमने ये कैलकुलेट किया और फिर डिवाइड किया, तो हमारे को टोटल मोल्स मिल गया सॉल्यूशन में कितना है, राइट? इतना टोटल सॉल्यूशन में मोल्स मिल गया, विच कंटेन्स 30% मिथनॉल, 70% वाटर। दैट मीन्स 0.3 ऑफ इंटू 0.3 इज मिथनॉल एंड 0.7 इज वाटर, राइट? अब ये मिल गया हमारे को मोल्स। प्योर मिथनॉल के मोल्स कितना है, प्योर वाटर का मोल्स कितना है बिफोर मेकिंग द सॉल्यूशन। तो इसको हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी वांट टू मिक्स, राइट? वी कैन नॉट मेजर मोल्स, वी कैन मेजर द वॉल्यूम ओनली, राइट? फिर मेजर करके मेजरिंग जार में लिया हमने कितना वॉल्यूम लेने का, तो वी कैन टेक कन्वर्ट दिस मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ मिथनॉल बाय मल्टीप्लाइंग विथ मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर मिथनॉल नाउ, because we are talking about pure methanol now. Volume of methanol pure कितना लेने का है, तो moles into molar volume of pure methanol will give us ये इतना volume of pure methanol लेना है मेरे को। Similarly इतना moles water का है, तो उसको pure water का molar volume लेने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो we get pure water का volume कितना। So what it means is I have to take 1.071 cubic meters of methanol plus 1.0529 cubic meters of water, mix them together, then I'll get a 30% solution of methanol in water, and the volume will be 2 cubic meters. That means the volume is not additive. It will not give 2.06 or 07 cubic meters, it will give only 2 cubic meters. समझा क्या? Any doubts? सर ये आंसर कितने डिजिट तक सेम आना चाहिए? अरे 3 डिजिट भी दिया तो काफी है, बिकॉज यहाँ पर नहीं, अगर डिजिट नहीं डाला तो 1 ही आ जाएगा, राइट? यस सर। सिग्निफिकेंट डिजिट डालना पड़ेगा आपको। डोंट ओके गिव 8 सर। डिजिट्स, डोंट गिव 8 डिजिट्स, 3 डिजिट भी डाला तो काफी है। बिकॉज मेजरमेंट देखा तो सी बेसिकली मैंने से 1.0171 क्यूबिक मीटर, दिस इज 1017.1 लीटर्स। मेजर कर सकते हैं, राइट? यस सर। सोचना पड़ेगा, कैन आई मेजर दैट? यस। अगर ये ओके डिटेल सर। जाएगा तो मेजर नहीं कर सकता इतना, मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि हम ऐसे सोचने का। ओके सर। ठीक है? यस सर। Any other questions? No? Okay, so I'll stop the recording now. Are you guys able to access the recording?